મોરની બાપુ ચેતનદાસની અમદાવાદથી દ્વારકા અને કૃષ્ણનગરી સુધીની કનક દંડવત યાત્રા, શ્રી દાદુધામ હનુમાન મંદિર કાંકરિયા કર્ણાવતી નગર, અમદાવાદથી દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી કૃષ્ણનગરી સુધી આ પંચતીર્થ 600 કિલોમીટર પ્રસ્થાન થઈ શ્રી જગન્નાથ મંદિર, ચોટીલા ધામ, શ્રી દ્વારકા નગરી, શ્રી નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ધામ, બેટ દ્વારકાજી સુધીની ચાલ માટેનું આયોજન કરેલ છે. જેમાં આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મ પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો અને રાષ્ટ્ર રક્ષા, ગૌરક્ષાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાખીને ચેતન બાપુ દ્વારા કનક દંડવત યાત્રા ચાલુ કરી છે. જે હાલ કનક દંડવત યાત્રા ચેતનદાસ બાપુ દ્વારા દંડવત બાવળા ચાંગોદરની વચ્ચે પહોંચી છે. જેમાં પોલીસના સુરક્ષાકર્મી, સમાજસેવક તથા અન્ય દ્વારા સુરક્ષા ટીમના સપોર્ટ સાથે સંપૂર્ણ રીતે સાથ અને સહકાર મળી રહેલો હોય તેવા દ્રશ્યો પણ જોવા મળેલ છે. નમસ્કાર મિત્રો, અમદાવાદથી દંડવત યાત્રા નીકળી છે. એના ખાસ બાપુ મોની બાપુ જે 20 ફેબ્રુઆરીથી નીકળ્યા છે અને આજે ચાંગોદર બાવડા સ્થિત ઉપસ્થિત છે અને અમે મળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખાસ આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. બાપુ, કઈ તારીખે તમે નીકળ્યા છો અને ખાસ શું વાત કરશો? બાપુ 20 ફેબ્રુઆરીના દિવસે કાંકરિયા હનુમાન મંદિર થી નીકળ્યા છે. અખિલ ભારતીય દાદુ સંપ્રદાય નિર્મોહી અને અખાड़ा राष्ट्र संत मोनी चेतन दास बापू दादू धाम हनुमान मंदिर से निकलकर जमालपुर जगन्नाथ मंदिर से चोटीला, राजकोट से श्री कृष्ण नगरी, द्वारिका सुधी सुदामा नगरी, यह कनक दंडोत यात्रा धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा हेतु से जो है बापू का मुख्य उद्देश्य धर्म के प्रति जागरूकता लाना है। बापू क्या बोलेंगे, इसका हेतु क्या रहा है? ये है ना धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा। इसका हेतु धर्म रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए बापू जो है दंडोत पद यात्रा 500 किलोमीटर की कांकरिया मणिनगर से द्वारिकापुरी तक कर रहे हैं। देश को, जनता को, सनातन को जगाने के लिए इनका ये उद्देश्य है। ये यात्रा कितने दिन में है? ये यात्रा 1 साल में भी पूरी हो सकती है, 1 साल से आगे भी बढ़ सकती है। क्योंकि 500 किलोमीटर है, मौसम हर चीज की, हर परिस्थिति में से गुजरना है, तो 1 वर्ष में पूरी हो सकती है, 1 वर्ष से बढ़ भी सकती है, 13-14 महीना भी हो सकता है। खास सुविधा की बात कर रहे हैं, कैसी सुविधा और कैसा प्रोटेक्शन से आप निकले? बहुत सुंदर है, सबका बहुत प्रेम, सेवा मिल रही है, हर जगह जगह पर जो है सत्कार हो रहा है, साधु संत भी आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पब्लिक भी जो है सम्मान कर रही है, और पानी है, चाय है, रहने की व्यवस्था है, हर चीज की सुविधा जो है मिल रही है। इसका तात्पर्य आपने बताया मेरे को कि इसका हेतु अपना सनातन धर्म का है। खास करके आप जनता को क्या मैसेज दोगे? जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि गौ रक्षा, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, बराबर, धर्म की रक्षा होना चाहिए, सनातन की रक्षा होनी चाहिए, बराबर, राष्ट्र की रक्षा होना चाहिए। देश और राष्ट्र अपने लिए सर्वोपरि है, उसके साथ साथ जो है धर्म भी सर्वोपरि है, और गौ माता की रक्षा होना अनिवार्य है। अगर गौ माता की धरती पर, पृथ्वी पर हत्या होगी तो धरती माता से जो है आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। आगे का संदेश क्या है आपका ये मुहिम का? अब आगे का संदेश यही है कि देश जो है सफल होए, उज्जवल होए, धर्म की रक्षा होए, राष्ट्र की रक्षा होए, गौ की रक्षा होए, बराबर, सनातन की रक्षा होए, यही उद्देश्य है। बापू अभी कौन से मूड पे, मतलब ये वो बोल नहीं सकते अभी? बापू जो है 14 साल तक मौन व्रत रहे हैं, नहीं बोले हैं, मौनी बापू जो इनका नाम पड़ा है, और राजस्थान की 900 किलोमीटर की जैसी यह यात्रा चल रही है, 2000 किलोमीटर की यात्रा कांकरिया मणिनगर से लेके खाटू श्याम तक, राजस्थान तक बापू 2017 में शुरू की थी, हाँ 18 में शुरू की थी, वो यात्रा पूरी की है बापू ने। મિત્રો, એક જ ઉદ્દેશ બાપુનો અને એમના સંગઠિત કાર્યકરોનો દેખાઈ રહ્યો છે કે સનાતન ધર્મને જાગૃતતા ફેલાવવાનો આ એમનો એક મુહિમ રહ્યો છે, અને આ યાત્રાને વર્ષમાં બી પૂર્ણ થાય અને વર્ષ ઉપર પણ લાગી શકે એવું એ જણાવે છે. જોતા રહો પ્રાઇમ 24 ન્યૂઝ, જીગર શાહ, અમદાવાદ.